As far as the consciousness, a lot of words have been said. But why did I start it? And what it is, let me touch upon some of the things very briefly. Because the format is more of a conversation. So, Shyamji, I think I've got 5-7 minutes, right, to speak. So, I'll speak for 5-7 minutes. See, when I talk about rich with money and rich with mind, as a tagline for Consciouspreneur, what exactly does this mean? अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं, तो वी आर टॉकिंग धनी या रईस, आप सिर्फ धन से नहीं मन से भी बनिए, पहला पॉइंट है ना. नॉट जस्ट रिच विद मनी बट रिच विद माइंड एज वेल. सेकेंड थिंग विच वी टॉक अबाउट इज पैशन विद अवेयरनेस, राइट, विच इज लाइक काम में जोश के साथ होश भी is the other point which we touch upon. And of course, there are clear frameworks and there are clear approaches and methodology. We are not just talking about something which is a philosophy or which is just a theory. This is a very applied science, which over a period of time I learned by virtue of burning candle from both sides. Okay? In the corporate world, when you are running a race, you somewhere feel that this is a race worth winning the gold medal, and after winning you feel that, hey, I was a rat. So this is the race which I was running at a point of time. I of course won and then realized I was a rat. But in the process I was burning candle from both sides. And what I realized that I somewhere now need to help those youngsters who should not be doing what stupid things perhaps I did. One. Second thing, now in this process, now I've developed a global clientele around the world, and these are the people who are very successful people, either the business people or the CXOs, running the large organizations, are very successful, but they are the people who think that their business life or their material life is different to their spiritual life. And my guidance to them is that, for you to become the business titan is actually your pathway to become or get into the spiritual life. And that's where we collectively work on those directions. And for me, spiritual word or spiritual as a word, somewhere has been highly or loosely used, misused or abused. Because हम जब बात करते हैं ना spirituality की, तो mostly we start connecting religion. Mostly we start connecting religion. But for me, spirituality is actually stability of mind, as simple as that. और कोई परिभाषा नहीं. Now you may ask, आपने 4-5 institutions जिसको कि I have studied a lot, कौन कौन सी हैं 4-5 institutions? एक institution is technology, एक institution is science, एक institution is religion, एक institution is spirituality, एक institution is leadership. ये 5 institutions, if you see, have immense potential to grow and continue to develop independently. But अगर आप इसको डबल क्लिक करें थोड़ा सा, तो you will find something very beautiful, very very beautiful. Science and technology, इन दो के बीच का relationship देखें हम. Actually, technology was created as a vehicle to develop science, if you look at it, right? And that was effectively created to develop our outer material world. अगर हम देखें पिछले 2 दशक की बातें या 2 सदियों की बातें, post industrial revolutions, the kind of growth which the combination of technology and science which has given to us, we can appear like God to our great grandparents. मुझे आज भी याद है मेरी माँ जब हम छोटे थे तो बात करती थी, जब हम छोटे थे बोले हमें समझ में नहीं आता था, बात करते थे कि एक कोई छोटा सा डब्बा होगा और उसमें गाने बजेंगे, और हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा कि इसके अंदर, छोटे से के अंदर कोई कैसे बैठ के गाना गा सकता है, कैसे बात कर सकता है. नाउ यू थिंक ऑफ द माइंड सेट. अगर आप किसी छोटे बच्चे से आज ये बात करो कि फोन में बटन भी दबाने होते थे, तो वो बोलेगा क्या बात करते हो, फोन तो यूं होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द माइंड शिफ्ट. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द अदर 2 institutions, which is religion and spirituality, the word religion actually is a Latin word which was created by 2 words, re plus ligari.
री हमने सुना है, री मीन्स रिपीट, रीडू, राइट? सो बेसिकली, एंड लिगारी मीन्स with yourself. So basically reuniting you with yourself was the basic ethos for creating religion. ठीक है? So uniting you with your inner world was the ethos, and religion was created as a vehicle to develop spirituality, i.e. stability of mind. So now you see the connection. Now technology and science is developing your outer world, religion and spirituality is developing your inner world, right? When you have a balance between these two, that's what I call the leader. That's where I call leader, and that's where I call rich with money and rich with mind. Right? Now the question is, आज क्यों? मतलब हमने ये शुरू किया. I came out with thought process, why today? Why not, you know? और ये ऐसी कौन सी नई चीज़ की हम बात कर रहे हैं? No, there is a specific reason when I say that. Then it became a very clear mission for me to start it today. See, अगर हम पिछले 200 साल और 250 साल में जाएं, 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए. पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज स्टीम, सेकंड वाज इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड वाज माइक्रो प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग और न्यूक्लियर पावर. तीनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर अबाउट इन अ गैप ऑफ 100 ईयर्स ईच. 1750 के अराउंड आया स्टीम, 1850 के अराउंड आया इलेक्ट्रिसिटी, 1950 के अराउंड आया वे न्यूक्लियर एंड माइक्रो प्रोसेसिंग पावर. But if you see a very stark or a subtle, double click aspect of these 3 industrial revolutions actually created a humongous effectiveness and efficiency aspect. In the sense, आप steam engine से कहीं कोई सामान ले जा सकते हैं. Electricity gave you immense productivity aspect of it, and nuclear and microprocessing power gave you amazing compute power. But this is a very different time. We are in Industry 4.0. We are in 4th industrial revolution. This industrial revolution is very different than previous 3. The previous 3 industrial revolutions changed the way we were doing things. Please listen to me carefully. But this one changes us. The previous 3 industrial revolutions, technology, science, all of these things are outside us. आपने बटन दबाया, बिजली जली, आपने बटन दबाया, बिजली बंद हो गई, खत्म. नाउ वी आर टॉकिंग द टेक्नोलॉजी विच हैज एंटर्ड बियॉन्ड आवर प्रोफेशनल स्पेस इनटू आवर पर्सनल, इनटू आवर सोशल एंड इन आवर स्पिरिचुअल स्पेसेस. राइट? सोशल मीडिया आप देख लीजिए. एम आई राइट इन सेइंग दैट? राइट? इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट इनटू द मशीन बिटवीन द 2 years. आज से 20 साल पहले आप आराम से काम करिए और घर जाइए. आपका दफ्तर हो गया, अब आपका घर है. अब आप दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, सब कुछ एक जगह खिचड़ी बना हुआ है. राइट? यू आर एट होम बट यू आर नॉट एट होम. समथिंग इज बगिंग यू. राइट? यू आर एट ऑफिस बट यू आर बीइंग बग्ड बाय समथिंग फ्रॉम सोशल और समथिंग फ्रॉम होम. यू आर connected omni-channel perspective, and you do not know how to disconnect. And this is applying for with all. We have been given, मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ रिलेटिवली बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स आए कि आप बिजली के जो नेकेड वायर्स होते हैं, नंगे तार, उनको हाथ ही नहीं लगाओगे, पंगा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है. देयर वर स्पेसिफिक साइज ऑफ केबलिंग, देयर वर स्पेसिफिक रेगुलेशन ऑफ स्विचेस एंड ऑल दोज थिंग्स वर क्रिएटेड फास्ट इनफ. बट ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी नई क्रिएट हो गई इन फॉर्म ऑफ AI, डिजिटल, सुनामी एंड नॉइजेस, nobody is having a clue. Governments around the world have a huge lag indicators. No clue as to the way the speed the things are moving. We have no clue how to control or how to regulate. And in this, onus comes on us. क्योंकि ये तो चलेंगी. I analyze few institutions. इस धरती को 4-5 इंस्टीट्यूशंस मिलकर चलाती हैं. कौन कौन सी? एक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, दूसरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तीसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चौथी फैमिली इंस्टीट्यूशन, एंड पांचवी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन. इन 5 के अलावा कुछ नहीं है. ठीक है? अब इन 5 पे हम डबल क्लिक करें, पॉलिटिक्स की बात करें.
पोलैरिटीज और डिवाइसिव, पूरी दुनिया में यही काम हो रहा है, ठीक है, तो बट्टा बैठा हुआ है। दूसरे इंस्टीट्यूशन पे चले हम, रिलीजन, क्या कर रहे हैं, अगेन डिवाइसिव या फंडामेंटलिस्ट, राइट? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फंडामेंटलिस्ट और क्रिएटिंग ए सेक्ट, दिस दैट। नाउ ये जो मशीन बिटवीन द 2 ईयर्स है उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो देन यू टेक ए साइड हियर और देयर, तो सेकेंड इंस्टीट्यूशन हाल खराब। थर्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ चलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यह रिलेटिवली बहुत अच्छी है, रिलेटिवली, बट ह्यूज लैग इंडिकेटर। आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जब आप किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को लेते हैं, मैं भी था एक समय, ठीक है, आप बोलते हैं यार पढ़ आया है वो ठीक है, ये यहाँ पे ना मेरी कंपनी के हिसाब से नाउ यू नीड टू ट्रेन, you need these processes, this induction process, this blah process, and this and that. So educational institution is also having a huge lag. It always used to have, but it is increasing. With the pace with which the digitalization and automation and AI, all of things is happening, it's so again इसका भी हिसाब किताब आप समझ सकते हैं कहाँ जा रहा है। Now fourth institution की तरफ चलें, परिवार, family, ठीक है। Now family is an institution from joint has started become nuclear. अब बची एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है बिजनेस। I see only this is an institution which has lot of potential to change the world. आज इस इंस्टीट्यूशन में परिवार अब यहीं बनने लगे, right? Boys and girls meet and then they decide and then they work together and then so family starts working here, ठीक है। 1 अगर आप देखें तो यही वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पॉलिटिक्स भी पूरी सीख ली जाती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीयर पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ ब्ला एंड दिस एंड दैट। तीसरी बात करें, यही वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ रिलीजन की कहीं कोई बात नहीं होती, मेरिटोक्रेसी की बात होती। सो परिवार की बात हो गई, रिलीजन की बात हो गई, ठीक है। फिर हम एजुकेशन पे, यही वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे यू हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है ना। फॉर यू to continuously elevate into the corporate ladder, you have to undergo 1 training, 2 training, 3 training, 4 training. So this is the institution which do not have anything about the religion or polarity or divisiveness. This is the only institution which talks about meritocracy. This is the only institution which talks about goals, right? Now, अगर हम इस institution के साथ जहाँ पे कि profitability और revenue का goal है, inclusivity को connect कर दें, so this has a huge potential to make a big change among the 5, 6 whatever institutions I talked about. And hence again I go back to the word consciouspreneur. So that's where we clearly focus on business as an institution, because this is the institution which has the huge potential to shape the world. You do not have anything with respect to, आपने ठीक है पढ़ाई करी जो कुछ, let's get to the table and talk about how you are continuously upskilling yourself, right? So यहाँ पे आपने एजुकेशन की बात कर ली, यहाँ पे आपने रिलीजन की बात कर ली, यहाँ पे आपने फैमिली की बात कर ली, यहाँ पे आपने मेरिटोक्रेसी की बात, and hence our entire focus is on the business world, and that's where we say that this is a place, these are the business leaders who can really make the difference. And where we work with the folks who are either the leading, industrialists or business houses or CXOs, who actually wants to make a dent, who actually wants to create something good, but who somewhere do not clear about confusion between materialistic world and spiritual world, and feel that these are two mutually exclusive. And we bring them together, saying that, hey, no. These are so together, these are so glued. जैसे हमने बात की ना, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, लीडरशिप, अगर आप अलग अलग देखेंगे तो वो अलग अलग में इन्फिनिट पोटेंशियल है, but the moment you start connecting them, you will find this so converged, and that's what is all about the consciouspreneur.